Sorry, एक minute. Okay. Good. So yesterday we were seeing the all the different portlets available for an employee. Employee profile. Yeah. Hmm. So we'll see how those portlets are defined now. Acha, one by one. Okay. Yeah. This is very important part actually. वो success factor is about portlets only. Acha, acha. Okay. So just like yesterday's example, मैं Jack. Jack बोल के मैं Jack ही सर्च था ना? कर रहा हूँ. ये सेकंड वाला. Yeah. इसको ही मैंने किया था. Okay. Okay. So see, what I'll do is for to put a little more pressure on you to make sure that you're going through the system. एक काम कर सकते हैं. What I'll do is every day we'll take up couple of portlets. Okay, and I want you to memorize what are all the different fields inside those portlets. अच्छा. Okay, so ज़्यादा time नहीं लगेगा. See, probably in a day couple of times what you do is open into the system, search for any employee और उसका employee पे कोई भी दो portlet select करके उसको 2-3 बार देखो. Okay, so you'll be able to remember the different fields that you see on each employee's portlets. Okay, so I want you to make it a habit till you remember all the different portlets. तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, you will be able to blindly tell which portlet field belongs to which portlet. Okay, that is one thing. And second thing is, let's say if I say I have a requirement to create something related to क्या बोलूं यूके का रिलेटेड bonus is, see, okay, ठीक है, let's take that example. If you say bonus will be part of which portlet? What do you think? Common sense say. I've shown you so many portlets yesterday. So what do you think? Bonus कौन से portlet में आना चाहिए? कहाँ पे दिखना चाहिए? What is it related to? Benefits. See, bonus is not a benefit. It is your part of your compensation. Compensation. Okay. Achha. If I say insurance, then it will be part of your benefit. Okay. So if I say something like Sodexo coupons, then it will be a benefit. Benefit. Okay. Gym so, membership. Correct. Benefit में आ गया. Okay. Yeah. So if I say something related to, yeah. Hello. आपका नेट चला गया था. आपका नेट चला गया था. Last 1 minute. अभी सुना दे रहा है क्या? 15 seconds. अपन बात कर रहे हैं. हाँ अभी आ रहा बस. Okay. So if I say something related to your paternity leave. Recording post. Hello. Yeah. If I ask you. Hello. नरेश भाई आवाज में कुछ तो दिक्कत हो रहा है. यार let me change to. आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या आपके उधर? मेरे इधर पोस्ट नहीं चल रहा है. आपके उधर चल रहा है ना? आई कांट सी रिकॉर्डिंग हैपनिंग हियर. दैट्स व्हाट. नहीं हो रहा है. आवाज तो आ रहा है फिर धीरे-धीरे. ओके. नहीं, लेट मी चेंज टू माय मोबाइल नेटवर्क. बोलिए. मेरे इधर फ्रीज हो गया आपका स्क्रीन इसलिए. ओके. आई एम चेंजिंग टू माय मोबाइल नेटवर्क. अभी कैसा है? हेलो. 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 हेलो.
हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ अभी ठीक है क्या? हाँ अभी तो क्लियर है एकदम। ओके ठीक है, तो मैंने हाँ अभी चालू। मोबाइल नेटवर्क को चेंज कर दिया। अच्छा नरेश भाई, हाँ अपन एक हाँ। काम करें क्या? या अपन ऐसे ही आपके हिसाब से ना, विल जस्ट हैव डिस्कशन, मुझे कुछ दिखाओ मत आप। विल जस्ट हैव डिस्कशन के ये चीज कहाँ आएगी, तो इट विल बी मोर क्लियर इन माय माइंड। जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस विल कम टू बेनिफिट, करेक्ट सोडेक्सो विल कम टू बेनिफिट। करेक्ट। आपने पूछा बोनस किस में आएगा, तो बोनस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। सो ऐसे एग्जांपल देके, इफ आई अंडरस्टैंड, नो आई नेवर फॉरगेट, आई थिंक सो। नहीं बट सी बट प्रॉब्ली आई माइट आस्क यू अबाउट कपल ऑफ देम, बट एक एक पोर्टलेट पे शायद देल बी अराउंड 15 to 20 डिफरेंट फील्ड्स। तो अभी ठीक ऐसा है। पूछना शुरू करूंगा तो पूरा 1 घंटा उसी में चला जाएगा। बट ठीक है, आपके हिसाब से करिए। ये देखो सी कॉम्पनसेशन हम्म इंफॉर्मेशन, तो इसमें वी हम्म ऑलमोस्ट हैव अराउंड 20 to 30 डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है तो आई कैन नॉट आस्क यू ऑल दैट, सो वो थोड़ा कॉमन सेंस से आप बोल पाते हो कि if I ठीक है ठीक say है। something about, let's say, pay related, so all that has to come हम्म under comp information. कंपनसेशन। Yeah, compensation. Then if I ask you something हम्म about your work location, so work location बोलते it has to come under your job information. ओके। Okay. So if I say where do you update your dependent details, dependent portlet. हम्म Okay. ऐसे आपको पर्सनल डिटेल्स। नहीं, personal details is your own details. But when it comes to dependent हम्म information, you have a separate portlet for dependents. यहाँ देखो. डिपेंडेंस। ठीक है, गॉट इट। Okay, so when I say payment information, payment is different, compensation is different. Payment is paying you for whatever services you are delivering. So that payment information बोले तो how do the company make payments to you? It is through a bank account. हम्म Okay, हम्म so हमारे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में पेमेंट बोले तो सैलरी आएगा, बट यहाँ पे पेमेंट इंफॉर्मेशन बोले तो इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सैलरी, इट इज अबाउट योर बैंक इंफॉर्मेशन. ओके। Okay, so now let's see how do we configure all these portlets. See, this is the front end. Okay, ठीक है। biographical information में we are able to see around 6 different fields. See, this is one field, हम्म this is one field, this is one field. यहाँ पे और हम्म 3 fields है. हम्म Okay, so यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो you have an edit option. हम्म Okay, and whatever 6 fields that you're seeing, you'll be able to see the same number of fields here also when you edit it. हम्म And ओके। then you can maintain some data. हम्म Okay, birthplace, region of birth, selecting something, blood group. ऐसे मैं सेलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ. ठीक है, हम्म अभी यहाँ पे भी डेटा आ गया. Okay, so this is हम्म your field ID and this is called as data. Okay, so what हम्म is the field? Region of birth. और उसमें डेटा क्या है? MP है. Okay, and what is your birthplace? Bangalore. So this is called the field name or field ID, and then this is called the data. Whatever that you maintain will be called as data. हम्म Okay, so there are different ways to maintain data and different types of data. We have numeric data, we have date type of data where you will be maintaining only dates. There are alphanumeric also. There are long बोले तो like हम्म very big number, probably 10-15 digits का number कुछ है. Decimal places का type of number. So you can define what type of data will be linked to each particular field. आपका आपका हाँ हेलो Yeah, sorry, you हेलो। were saying something. आपका नेट वापस, नेट का इशू हो रहा है वापस, आपका ब्रेक हो रहा आवाज। और ये टाइम पे ना मुझे लग रहा है कि हेलो। हाँ अभी आ रहा अभी, थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, हो जाएगा। क्या करें अभी। ठीक है, तो बायो
बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में 6 फील्ड्स है, ठीक है, सपोज ये क्या? सर बाय डिफॉल्ट आती है 6 फील्ड्स। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ अभी। सो ऑल दीज फील्ड्स आर कॉन्फ़िगरेबल। कॉन्फ़िगरेबल बोले तो यू कैन कस्टमाइज व्हाट फील्ड्स यू वांट टू सी एंड व्हाट फील्ड्स यू डोंट वांट टू सी। हेलो? Okay, so how do Okay. we configure this? We have two options here to configure these fields. Okay, एम्प्लॉय प्रोफाइल हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए we have either an option. First option is using a data model, or you can also use instance. Through instance, we have an option called as Okay. manage business configuration. So using this manage business configuration, you can change the different attributes of the field. Okay, so now Okay. यहाँ पे हमें biographical information बोल के दिख रहा है, right? So if you come to manage business configuration, so this is called as manage business configuration. Let me type it once again. अभी ये font, ये color changes की वजह से यहाँ पे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है। No, I can see manage business configuration. Okay, business this one. This is the tool. configuration. I can see, yeah. Okay, great. So this is the tool that we are going to use to make changes to these fields. Okay. Okay. So I'll just give you a demo, then I'll go a little in depth. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में Okay. हमें पहले एम्प्लॉय सेंट्रल बोल के एक दिख रहा है, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोफाइल बोल के और एक दिख रहा है नीचे. Okay, so let's focus only on employee central for now. Okay. So यहाँ पे you will see, you are seeing different side headings. Okay, बहुत सारे categories दिख रहे हैं. All these are different portlets that you will see on an employee profile. So manage business configuration is the back end of the portlets or the employee profile. Okay, so अगर हमें biographical information में field का related कुछ changes करना है, तो we come to manage business configuration and then we will go to person info. For biographical, it is named as person info, not personal, it is person. Okay, so first portlet that you're seeing is biographical information. To make some changes inside this, so when I say changes, I'm not talking about data, I'm talking about configuration. Okay, so earlier I've told you, I'm not sure if you've able to hear me then. So these field attributes are related to configuration. What you maintain for each field is called as data for that particular field. Okay, तो मैं अगर कुछ field attributes में मुझे change करना है, तो मैं यहाँ पे आके इस पे click करूँगा, person info पे click करूँगा. Okay, now this comp info will go and person info will open up. तो if you're able to see, यहाँ पे मुझे label बोल के दिख रहा है. Okay, so ये label, this can be changed as per your client requirement. Okay, so if you want to see it as person info, see आप change कर सकते. Okay, तो यहाँ पे आप देखोगे तो here it says identifier and here it says label. Okay, so in SuccessFactors, for every object, every field, any entity, you will have two things. One is a code or an ID, and the other one is a label name.
Okay, so code Okay. and ID will always remain same. You will never be able to change your code. Okay, so let's say I'll just give you an example. तो आपका individual house है, okay, and government has given a house number to your home. Okay, let's say वो उसका house number है 115 कुछ है, ठीक है. And then let's say लेबल नेम बोले तो आपने कुछ नाम दे दिया आपके घर को. लेट्स से श्री निलयम बोल के ऐसा नाम दे दिया. So see, this address, this code will never change. Okay, this is given by the government and you will never be able to change the number of the house. But let's say you've sold your house to someone else. Okay, तो उसने कुछ और नाम दे दिया इसको. That can be changed. Correct, exactly. So the house name has changed. Let's say अभी मैं कुछ बोल के कुछ नाम दे दिया ऐसी. ओके, तो यहाँ पे जो मैं हाउस नंबर को रेफर कर रहा हूँ, दिस नंबर विल नेवर चेंज थ्रू आउट द लाइफ टाइम. ओके, so in success factors there are always two different things. One is an ID and the other one is a label name. Label. Just remember blindly that a code or an ID will never change. Okay, only the label name can be changed. So the label can be customized based on. यार थोड़ा mute कर लो ना. एक सेकंड. Yeah. Okay. So you there? मैंने म्यूट कर रखा है. आप लगे हो. Okay, all right, fine. So code is something which will be unique. Okay, the system will not have same codes for each entity, and the label name can be changed anytime throughout your project. Okay, and this can change any number of times, but this one will always remain the same. Okay, you have to remember this blindly. Code and ID are unique and they will never change. Label name can change anytime, but normally मतलब ये भी चेंज नहीं होगा. यूनिवर्सल रहेगा वो. या यूनिवर्सल रहेगा, यूनिक रहेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर समथिंग एल्स. एक बार आपने कोड एक चीज के लिए कुछ यूज किया, सो इट विल बी देयर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड और एंटिटी. यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर समथिंग एल्स. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पर्सन इन्फो इज द आइडेंटिफायर. इट मीन दिस इज द आईडी. दिस विल नेवर चेंज. ओके. ओके, and this one label name, it's up to you. Whatever name that you give, that is going to appear here. Okay. Okay, so let's say I'm going to change this to person information now, and I'll just save this. तो अभी यहाँ पे बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन बोल के दिख रहा है. आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग द स्क्रीन क्योंकि मैंने बैक एंड में कुछ चेंज किया है. आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रंट एंड. पर्सन इन्फो कर दिया ना, ये पर्सन इंफॉर्मेशन हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक चेंजेस. अभी यहाँ पे पर्सन आईडी है. सो यहाँ पे क्या है, मैंने ये पोर्टलेट का हेडिंग चेंज कर दिया. बट इन केस इफ आई वांट टू चेंज समथिंग एल्स इनसाइड द फील्ड, ओके, मैं यहाँ पे जाऊंगा, टेक एक्शन, मेक करेक्शन. Okay, then I'm getting an option here. So I'll say person or employee ID. तो मैंने ऐसे कुछ इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, which is a label. और ये फील्ड का आईडी और आइडेंटिफायर क्या है? पर्सन आईडी एक्सटर्नल. सो दिस वन यू विल नेवर बी एबल टू चेंज. I got it. Okay, so this will remain the same and this one you can change it. इसके बाद मैं सेव कर रहा हूं फिर से. ओके, ये चेंज हो गया, सेव हो गया यहाँ पे.
यहाँ पे अभी भी वही पर्सनैलिटी बोल के दिख रहा है. सो लेट मी रिफ्रेश दिस. See, it has changed now. आ गया. In this way, you will be able to see or make changes to your portlet or different fields inside each portlet. ओके, सो यहाँ पे हम डेटा नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ लेबल नेम्स, फील्ड आईडीज या फील्ड नेम्स चेंज कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो जो भी हम यहाँ पे फील्ड्स देख रहे हैं, इन सबको हम सक्सेशन डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं. Okay. Okay, all the fields and portlets are part of succession data model. Okay. If you remember, last week we were discussing about corporate data model. So the four important data models that we have in SuccessFactors is, first one is corporate data model. Second one is country specific corporate data model. Third one is succession data model. Fourth one is country specific. CSF बोले तो country specific. Okay, these are the most important data models in SuccessFactors, and using these data models we can make changes to the foundation objects and also to the portlets and fields. Okay. Okay, so corporate data model. Yeah, so now what we'll do is slowly we'll get into each data model. What does it have? CSF का full form क्या है? कुछ country specific. Country specific. Yeah, if you want I can bracket में डाल दूँगा. Country specific, that's it. Okay, CSF, country specific corporate data model. So once I explain that concept, it will be easy for you to remember. Okay, so पहले it will be easy for you to understand succession data model. Okay, so when I say succession data model and country specific succession data model, the difference is succession data model will be common throughout your organization. It doesn't matter in which country you are implementing SuccessFactors, everyone will have common set of fields. Okay. Okay, like let's say अभी हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय को देखेंगे, तो एम्प्लॉय को पर्सन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, रीजन ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये तो हर कंट्री में मेंटेन करते हैं. these are some common fields which are common throughout the world for any employee in any organization. Right? Yeah. So or do you think any of these fields are very country specific? This will be captured only in UK but we never capture it in India, or we never capture it in UK. ऐसा कुछ है क्या इसमें, ये 6 fields में? नहीं, this is very basic and common, I think. Correct. Okay, तो let's say यहाँ पे ये fields में देखो. See, do you see anything very specific to a particular country? आपको कुछ याद आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि I think यार we never use this field. It is very country specific. Only this country use this field. अच्छा, preferred language, nationality, like status, gender, initials. नहीं, ये भी बेसिक ही लग रहा है. Everywhere they use, like there's nothing change. जो ये 3 लास्ट का parents name and all, these are not that much mandatory actually. Not mandatory, but see, you cannot say that this is very specific to only Australia. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में यूज करते हैं, इंडिया में कभी हम यूज नहीं करते बोल के कुछ नहीं. लेट्स से इफ यू go and apply for your bank account, probably they will ask you for your mother's maiden name. Okay, so वहाँ पे भी वो details हम capture करते हैं. So you cannot say that it is very specific to a particular country. So whatever fields that are common or which can be used throughout the world for any country, they are called as global fields. Global fields, okay. Yeah.
So when I say global fields, you can use them for all the countries. Okay. उसके बाद आएगा country specific fields. Okay, it means वो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया. They कंट्री are टू कंट्री वेरी very करता है specific. रिक्वायरमेंट के हिसाब. Exactly, very specific to a particular country. So now I'll give you an example. अभी सरनेम बोल के हम यूज करते हैं. डू यू थिंक सरनेम इज यूज्ड इन एनी अदर कंट्री और इज इट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर कंट्री? यूके वगैरह में तो यूज करते हैं सरनेम. मिडिल नेम लास्ट नेम. हाँ, बट सरनेम यूज करते हैं क्या? नहीं, सरनेम नहीं. सरनेम इंडिया में होता है. सिर्फ इंडिया में यूज करते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स से प्रोविडेंट फंड. Do you think it is used in some other country? Probably the name which is used, the purpose will be different. Okay. True. Purpose can be same, but the name that is can given, be different. Yeah. आपका यूके में नेशनल इंश्योरेंस है. यहाँ पे हमें प्रोविडेंट फंड है. Yeah. यूएस में देखेंगे तो उसको 401 के बोल के कुछ बुलाते हैं. अच्छा. Okay, so it means we have similar concept in each country, but we have different name which is specific to a particular country. Okay, so similarly address में हम पिन कोड यूज करते हैं, यूके में भी पिन कोड यूज करते हैं, but when it comes to यूएस, नहीं यूके में पोस्टल कोड. करेक्ट, एग्जैक्टली. सो अगर यूएस में जाएंगे तो वहां पे जिप कोड हो जाता है. वो जिप कोड हो जाता है. ट्रू. Okay, so again, you cannot use zip code in India. Yeah. In the same way, I cannot use postal code in US. So certain fields are very specific to some particular country. Okay. EEO, Equal Employment Opportunity, बोल के एक concept है. Okay. We cannot use it in India because we don't have any such policy or any government rule that equal employment opportunity देना है. यूके में ज्यादा है. डाइवर्सिटी के लिए है, बट वी नेवर टॉक अबाउट ईईओ, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो वो यूएस का कॉन्सेप्ट है. सो यू कैन नॉट ब्रिंग दैट दोस काइंड ऑफ फील्ड्स इनटू इंडिया. यू कैन नॉट कैप्चर दैट डेटा. ओके, सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ईएसआईसी. ईएसआईसी, इट इज, एक मिनट, आई फॉरगॉट द फुल नेम. एम्प्लॉय सिक्योरिटी, Employee State Insurance. Okay, this one is again specific to India. तो जिसका भी सैलरी आई थिंक 12,000 से या कुछ कैप है, उससे कम है, तो उसका थोड़ा मनी ईएसआईसी में जाएगा. जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस. इन केस ऑफ कुछ मिसहैप हो जाएगा, तो गवर्नमेंट साइड से उनको कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा. दे विल पे, द गवर्नमेंट विल पे फॉर देम. So in this way, whatever fields that you capture which are very specific to a particular country, all those will be configured in country specific succession data model. Okay, अगर हम सिस्टम में उसको देखना है तो if we go to employees profile, now we have personal information here. Okay, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन बोल के है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन यहाँ पे ग्लोबल इंफॉर्मेशन बोल के है, ऐड ग्लोबल इंफॉर्मेशन. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, इट विल आस्क यू व्हाट कंट्री इंफॉर्मेशन यू वांट टू मेंटेन. So if the employee is from Australia, he will select Australia. So based on what you have configured for specific to Australia, वही fields दिखेगा. Okay, so these fields, number of children maintain कर रहे हैं, degree of challenge, it means there are people who are specially abled, तो उनका challenge क्या है और उनका degree of challenge. Okay, degree of challenge बोले तो let's say if I am handicapped, हाथ टूटा है या पाँव टूटा है. Exactly. Let's say अगर मेरा सिर्फ 2 fingers ही टूटा है, तो मेरा शायद level of challenge will be just 1. Okay, in case if I don't have legs at all,
Okay, I use a wheelchair and I cannot walk completely. I'm like completely dependent on someone. So probably my degree of challenge will be 5. 5. Okay, yeah. कैसे? Okay. How do you calculate that? नहीं, वो शायद गवर्नमेंट के हिसाब से आएगा. See, अच्छा, when वो you, डिफाइन कर रखा ऑलरेडी हाँ, उन्होंने. वो ओके. सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से मिलेगा ना कि व्हाट लेवल डेथ ऑफ हैंडीकैप. सर्टिफिकेट. हाँ, तो उसके ओके, हिसाब से गॉट इट, यू गॉट. मेंटेन इट. कौन सा चैलेंज ग्रुप में अच्छा. आओगे? लेट्स से चैलेंज पीयर, एम्प्लॉय विथ मल्टीपल चैलेंजेस. ओके, कुछ माइनर्स इंश्योरेंस पॉलिसी, मल्टीपल चैलेंजेस पीयर, अदर ट्रेनिंग, ऐसे कुछ. सी ड्रॉप डाउन ऑल दैट यू कैन कॉन्फ़िगर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. तो कुछ सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ चैलेंज, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज इज इट? लिमिटेड वर्क कैपेबिलिटी. सी इट मीन्स यू कैन नॉट वर्क टू मच, लाइक वॉकिंग करना वो सब नहीं, कहीं पे बैठ के कुछ करना नहीं, तो थोड़ा ऑफिस के अंदर मूव करना वो सब कर लेते हो. So that will be limited work capability. ओके. Sitting jobs only. It means you cannot move at all. पूरा दिन कहीं पे बैठ के काम करना है तो that you can do. ओके. You cannot even move an inch. Unlimited work capability. It means let's say उसका कुछ शायद फिंगर्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो बाकी सब ठीक से काम कर रहा है, तो he'll be able to move around, work on anything. ओके. ओके, तो तब क्या कर सकते? अनलिमिटेड वर्क कैपेबिलिटी. इट मींस ही इज अ हैंडीकैप्ड बट स्टिल, और लेट्स से एक ही आंख काम करता है उसको, then he can, there is no restriction, right? He can work on anything, but still he is considered as challenged because he has only one eye. ओके, तो ऐसे चीज अगर हमें मेंटेन करना है तो ये पूरे एक कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स में ही हम मेंटेन करते हैं, because these lists can vary from country to country. Okay, every country will have a different set of drop down values and different set of degree of challenges. ओके. शायद मेरा डिग्री ऑफ challenges 1 से 5 तक शुरू होगा. लेट्स से 1 will be the lowest challenge and 5 is the highest challenge. शायद कुछ और कंट्री में 1 will be the highest challenge and 5 will be the lowest. तो ऐसे अगर हमें कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स डिफाइन करना है तो देन वी डू इट यूजिंग कंट्री स्पेसिफिक सक्सेशन डेटा मॉडल. ओके, अच्छा. सो ग्लोबल फील्ड्स के लिए वी हैव सक्सेशन डेटा मॉडल. इट मींस दीज फील्ड्स आर कॉमन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. But when it comes to country specific, they are specific to a particular country and you can make these changes using succession data model. Okay. अच्छा. Now similarly, corporate data model. Okay, corporate data model बोलो तो यहाँ हमने fields देखा है, पोर्टलेट्स देखा है और उसमें एक एक फील्ड देखा है. तो ये पूरे फील्ड्स पूरा मिलके एक पोर्टलेट बनेगा और ऑल दिस कलेक्शन ऑफ पोर्टलेट्स विल बिकम अ एम्प्लॉय प्रोफाइल. राइट, तो ये भी मैं लिख दूंगा, फील्ड्स एंड देन पोर्टलेट, और कलेक्शन ऑफ पोर्टलेट्स विल बिकम एम्प्लॉय प्रोफाइल. एम्प्लॉय प्रोफाइल, एग्जैक्टली. तो fields are either data which can be maintained manually, which can be drop down values, which can be date values. So some of the fields are your foundation objects. Okay. Okay, so when I say foundation objects, as I've explained earlier, foundation objects will act like your skeleton to your HR system. Okay, they are like the backbone, they are the supporting objects, because that is the reason they have been given foundation objects. Okay, they define your org structure, your job structure and your pay structure. Org structure, job structure and pay structure. Okay, so foundation objects define, sorry,
foundation objects define your work structure, job structure and your pay structure. Okay, so अभी एग्जांपल्स देखेंगे. तो org structure में आपका कंपनी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट. ओके, और भी ऐड करना है तो कॉस्ट सेंटर. ऐसे we can name few foundation objects which are related to your org structure. तो in case if I want to define your organization, आपका organization का structure बताओ बोले तो then you might say the headquarters is in head office is in Mumbai और उसका head हर state में branches है which are head of the states और उसके नीचे districts है. डिस्ट्रिक्ट में हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोल के एक ब्रांच है. फिर उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में वी हैव अराउंड 10 डिफरेंट ऑफिसेस. ओके, सो वहां पे क्या हो रहा है, यू आर एबल टू डिफाइन द कंपनी स्ट्रक्चर. ओके, सिर्फ आपका डिपार्टमेंट्स, बिजनेस यूनिट उसके हिसाब से. ओके, योर हेड ऑफिस डिफाइन कर रहे हो, उसके बाद उसका ब्रांचेस डिफाइन कर रहे हो, ब्रांचेस का हेड ऑफिस कहाँ पे है और ये इच ब्रांच में कितने डिपार्टमेंट्स हैं. वैसे वो हायरार्की को हम जो डिफाइन करते हैं, ऑल दैट विल बी पार्ट ऑफ योर ऑर्ग स्ट्रक्चर. ओके, जॉब स्ट्रक्चर बोले तो यहाँ पे यू विल टॉक अबाउट योर डेजिग्नेशंस, लेवल्स. प्रॉब्ली ऊपर का लेवल में सीईओ रहेगा. सीईओ के बाद लेट्स से वी हैव सीईओ के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद लेट्स से सीनियर मैनेजर. सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर. मैनेजर के नीचे टीम लीड. टीम लीड के नीचे कंसल्टेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स के नीचे जूनियर एग्जीक्यूटिव. ये क्या हुआ, आपका जॉब का हायरार्की है ये. ओके, तो हाउ डू वी डिफाइन दिस जॉब्स. यहाँ पे हमारे पास जॉब कोड, job level, sorry, job level, right? Yeah, job level, job classification, और ये दोनों हो गए हैं सेम. क्या दे सकते हैं, तो ठीक है. अभी के लिए लेट्स एंड दिस हियर एंड देन विल गो टू द पे स्ट्रक्चर. तो को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा सिस्टम में. लेट्स से योर सीईओ इज देयर. सीईओ का सैलरी कितना होना चाहिए, उसका रेंज क्या है. उसके बाद एमडी का रेंज क्या होना चाहिए. उसके बाद सीनियर मैनेजर, उसका रेंज क्या होना चाहिए. तो ईच वन देयर सैलरी रेंज विल डिपेंड ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट यू मेंटेन फॉर द एम्प्लॉय. तो व्हाट ऑल कैन बी दोज एट्रीब्यूट्स. पे स्केल, लेवल, पे ग्रेड, पे टाइप. ओके, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं which will define what kind of salary each employee should get. Okay, so when you say pay level is 10, then उनका सैलरी शायद 5 to 6 lakhs रहेगा. Then if I say level 2, probably इनका 70 to 80 lakhs. Sorry. Let's say if I say level 1, तो इनका almost 2 crores. तो level 1 बोले तो he is like at the CEO level. So, how do we define these levels? Based on your experience and based on so many other factors. Okay, so all these pay related structure, your hierarchy related to your pay structure will be part of this one. Okay, so जो भी हम यहाँ पे अभी मेंशन किया है, all these are called as
foundation objects. Okay. So your foundation objects will define your org structure, job structure, and pay structure. So in case if any of these fields or any of these objects have anything specific to country, okay, then it will be part of your corporate data model. पहले हमें जो भी हम कॉमनली यूज कर सकते हैं ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, इसमें जो भी कॉमन हर कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल दैट विल बी कॉर्पोरेट डेटा मॉडल. In case if there are any specific objects, your foundation objects which are specific to any specific country, then that will become part of your country specific corporate data model. Okay. Now I think it is very late for us to start. Okay, anyway, we have started this corporate data model. So earlier day we went into the provisioning system. And we downloaded the corporate data model and made some changes to location, and then we tried to import the same. XML mein. XML mein, exactly. So I'll cover that part now. So corporate data model and country specific corporate data model, these two are XML based. Okay. तो अगर आपको कुछ चेंजेस करना है कॉर्पोरेट डेटा मॉडल या फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स विच आर XML बेस्ड, देन यू हैव टू यूज प्रोविजनिंग सिस्टम. अच्छा. ओके, सो प्रोविजनिंग सिस्टम में हम लॉग इन करेंगे, विल डाउनलोड द डेटा मॉडल related to corporate data model, and then we make the changes and then re-import into provisioning system. So all the changes will be made only through provisioning system. Recently, last upgrade mein SAP has at least given us an opportunity to download the corporate data model related config from instance. Okay, so you cannot make any change, you can only download and see what is there in the corporate data model, that's it. Okay, but अगर आपको कुछ change करना है और import करना है, that will happen only through provisioning system. Okay, but when it comes to succession data model and country specific succession data model, these can be handled in two ways. Okay, these can be handled either through provisioning system or through instance also. Instance. BizX. Yeah, BizX. So यहाँ same will apply to your country specific corporate data model, succession data model also. Okay. अच्छा. यहाँ पे corporate data model can be made. The changes can happen only through provisioning system. When it comes to succession data model and country specific succession data model, you can do it through both provisioning system and instance. When I say provisioning system, it means it is through XML pad. ठीक है. नरेश, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है सक्सेशन डेटा मॉडल और ये जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है ना, आई एम बिट कंफ्यूज इन दिस. कैन यू प्लीज नहीं, यू आई नो दिस विल बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू, वो आपको समझ में आ जाएगा. सो ये मुझे क्लियर हो गया. ओके, कहाँ पर क्या करना. तो सी सक्सेशन डेटा मॉडल इज योर पोर्टलेट्स. ठीक है. ओके, यहाँ पे पूरा पोर्ट्रेट्स दिखेंगे. फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स बोले तो ये पूरा ऑब्जेक्ट्स होंगे. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट. सक्सेशन डेटा मॉडल इज योर पोर्टलेट. कॉर्पोरेट डेटा मॉडल विल बी योर ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो स्क्रीन पे दिखाएंगे एक बार. दिखाऊंगा यार. ये सी, आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग. दीस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मतलब मुझे एकदम मेमोराइज होता है तो मैं फिर रिलैक्स रहूं. हाँ ना, मैं क्या सोचा था, इट इज लेट फॉर मी टू कंटिन्यू एंड गेट इनसाइड दिस, सो इसलिए तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा था. सो सक्सेशन डेटा मॉडल हमने आज देखा है. वी हैव सीन द पोर्टलेट्स एंड हाउ टू मेक दोस चेंजेस इनसाइड दोस पोर्टलेट्स फील्ड लेवल पे. ओके, कॉर्पोरेट डेटा में मॉडल में अगर हमें चेंज करना है तो वी हैव सीन दिस अर्लियर.
we were actually trying to change the attributes of a location. So succession data model में क्या है? It is related to portlets and fields. Okay. तो यहाँ पे एक एक फील्ड के लिए आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स मेंटेन करोगे. Okay, but when it comes to corporate data model, when I say objects, object is again a combination or a set of different fields. Okay, so अभी मैं लोकेशन ग्रुप बोल रहा हूँ. So लोकेशन ग्रुप में मुझे कोड मिल रहा है, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, और in case if you add any more fields, you can add them also. Okay, let's say if I take pay component. Okay, so अगर मैं कोई भी बोनस बोल के एक पे component ले रहा हूँ, तो see you have set of almost around 15 different fields. So each object will again will consist of multiple fields. Okay, but when you say fields in succession data model, each field will have only one value. Okay, you will not have different things inside each field. मैं जब employee पे दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको let's say if I say person ID or employee ID, it is only one field value. Okay, date of birth जब मैं बोल रहा हूँ, तो it is only one field. But when you come to an object, okay, when you come to a corporate data model, or when you open a foundation object like pay component, it has different set of values. You can define multiple things inside each object. Okay, so thing is, if I started वो और अंदर जाना चाहिए. अभी ऊपर ऊपर 1-2 मिनट में वो खत्म नहीं होगा, इसीलिए I'm unable to continue. नहीं ठीक है ना, जस्ट लीव इट हियर एंड कल 7:30 बजे कंटिन्यू करते हैं. तो होपफुली 7:30 से 9 बजे तक भी बैठे तो कोई इशू नहीं है. और वी कैन कवर अप. ओके, ठीक है, चलेगा. नो प्रॉब्लम, नो इशू. ओके, तो कल हम पूरा डेटा मॉडल्स खत्म करेंगे. हाँ, कल खत्म कर लेंगे. 7:30 शार्प विल कनेक्ट. ओके, ठीक है. एंड टुडे आई विल डू इट, डोंट वरी. ओके, ओके, ऑलराइट. ओके, थैंक्स ब्रो. थैंक्स. Bye. Sure, yeah.